Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. And we just wait for a couple of minutes and then we should be good to go with today's mid-market session. Great, Sudhakar ji, good morning, good afternoon. Sachin ji, good afternoon. Audio, video clear. Okay, Pallavi ma'am saying audible. Okay, great. So we'll just wait for a minute. Nifty breaks 25,500. Yes. So another day of pressure that is seen in Nifty. Shivanand ji, good afternoon to you as well. Murthy ji, good afternoon. Parimal ji, hello, good afternoon to you. So Nifty actually, breakout sustain nahi kar pa raha. I think that is what we are seeing since last three sessions. Stuck in 25,500 CE. I think you are very close to the at the money strike at this point. So hopefully, I think it should sustain 25,500 is what I feel. Let's see. We'll look at the data. Morning में था momentum. Nikhil ji, good afternoon. Gopal ji, good afternoon. Pankaj ji, good afternoon. Ram Mohan ji is your. Sachin ji. मॉर्निंग में था बट अल्टीमेटली वो मोमेंटम फिजल आउट हो गया. कल अगर आपको याद है अपने निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था 5 मिनट्स चार्ट पे, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिला है यहाँ पे. So nevertheless, made money today. Great, super. Bravo ji, good morning, good afternoon. Shrinu ji, good afternoon. So great guys. So let us start off with the mid market session. So सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स अपडेट. तो इफ यू लुक एट डाउ जोन्स, so Dow Jones closed positively 0.91% higher. But if we see S&P 500 and Nasdaq, S&P closed 0.11% lower, Nasdaq closed around 0.82% lower. If we look at Dow futures is trading in green at this point, 0.31% higher. So हो सकता है US markets में एक positive opening दिखाई दे. Europe markets देखे तो DAX was down 0.9%. So UK was up 0.28%. France again it's up 0.56%. So Europe markets again were mixed, or DAX being in negative, whereas UK and France are in green. The Euro stock index is again in green, 0.34% higher. If we look at the Asian markets, Nikkei is down 0.5%. अगर हम Hang देखें, Hang is up 0.68%. So that is the best performing Asian index. Only the Hang is in green. Shanghai is down 0.11%. Kospi again some profit booking here, 0.47%. And Nifty and Sensex both are flat, down around 0.2% lower. So 2025 में 6 महीना हो गया है. So we just started July yesterday. So if we look at the market's performance in the first 6 months from 2025 until June end, so अगर हम global comparison करें, so हम देख सकते हैं कि कॉस्पी पिछले 6 महीने में almost 28% रिटर्न्स दिया है. So that is the best performing index of the lot. Followed by Hang Seng. So Hang Seng in 2025 calendar year is up around 21%. So Kospi and Hang Seng are the best performing global index for 2025, 6 months. The third best is Eurostock 50. So Eurostock 50 is nearly up around 10%. If we look at Nifty, Nifty was up around, is up around 7%. Whereas if we look at the US markets, so US markets initially they didn't start off well, then later off it kind of recovered. So Nasdaq is up around 6%, S&P is up around 5%, Dow is up around 5%. So if we see is the Kospi that is the best performing, followed by Hang Seng, then Nifty is above US markets, and Nikkei is up around 1% higher. So if you could see, almost all the indices went down when Trump announced, the tariff on almost all the countries, all its trading partners. And I think post that announcement, almost all the indices have seen recovery. Now I think the markets are keenly looking at what is going to happen on July 9th. I think that is what the markets are waiting for. उससे I think अभी next set of cues मिल सकता है.
And there is one other development that happened overnight is so Federal Chairman Jerome Powell mentioned if not for the tariff announcement, US would have gone for rate cuts. So just like we discussed yesterday, almost all the central banks across the country have cut down interest rates. But US was the only outlier. So US didn't cut interest rates just for one single reason is because the Fed feels because of these tariff, there might be rise in inflation and unka inflation ka forecast. But again, that is the reason why they are taking a cautious stance on that. And that is the reason why, both the President Trump and Jerome Powell, the federal chairman are, both are having a go at each other at this point. So we'll have to wait and watch and see what US does in the July meet. So that was about the global update. अगर आप macro indicators की बात करें again, US dollar index 96.83 पर है. So it is in a downtrend again. Nothing major to worry about the US dollar index. The overall trend is down. It is also trading below its key moving averages, and as long as it stays below 98, 97, it is going to be a positive sign for us. If we look at the yields again, yields have the US government bonds 10-year yields that वो भी 200 EMA के नीचे चला गया यहाँ पे. So around it's trading at 4.27% at this point. Again, it was at 4.6, 4.5 if you remember at one point, and after that we have seen a gradual decline in the yields here. और अगर हम इंडिया विक्स की बात करें यहाँ पे तो इंडिया विक्स आज अराउंड 0.6% नीचे है. So around 12 के आसपास एक important support है इंडिया विक्स का. So as long as it goes down, it is I don't think we are going to see a major fall in Nifty or Bank Nifty or Sensex. We might have some kind of a जो minor fall, a minor sideways movement चल रहा है, शायद वही हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में. कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है. Or if you look at the dollar by rupee, so dollar is kind of gaining strength since the last couple of sessions. So right now it is at 85.74. So again, the 86 level will be the key level to track. So if we go below 85.3, it is going to be a good sign for us. But if we go above 86, chances are that we might see some pressure coming in our markets. और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, सो क्रूड ऑयल अगेन $68 to $66 बैरल के रेंज में ट्रेड कर रहा है. आई थिंक पिछले 4-5 दिनों से एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग दैट इज मूविंग इन क्रूड ऑयल. So again, that is beneficial for us in the long run. And if we look at gold again, it took support from its upward sloping trend line and it started to rise. So it is right now it is at $3,329 per ounce. So gold में थोड़ा सा बाइंग दिखा है सपोर्ट लेवल से. And if we look at silver, so silver is again consolidating in that range. So ये जो $37 to $35 per ounce का range है, so silver is kind of consolidating there. So nothing major triggers in silver and gold, and I think if you look at all the macro indicators, it is in our favor. So nothing major to worry about. और इफ यू लुक एट द एफआईआई पोजीशनिंग, कल के सेशन में हमने देखा एफआईआईज ने फिर से कैश मार्केट में बिकवाली की अराउंड 1970 करोड़ का. मंडे का ऑलमोस्ट 830 करोड़ का सेलिंग देखा गया था कैश मार्केट में. And if we see what they did in index futures again, so net index futures contracts was around 38,123. It has gone to 38,706. So mild buildup of short positions in index futures. और जिसकी वजह से लॉन्ग शॉर्ट रेशो में ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ. फ्रॉम 36.4 इट हैज गॉन टू 36.66%. So still there are no signs of shorts getting covered by the FIIs here. And कल अगर हम एडवांस डिक्लाइन भी देखें, so almost both were equal. So 1,314 advancing counters compared to 1,327 declining counters. So the ADX was, sorry, not ADX, the advanced decline ratio was almost near 1 year. It was 0.99. So FII is again, I think the next key trigger that we've been seeing since quite some days now will be this long short ratio should go up. FII should cover their shorts. Because even though improvement हुआ है 23% से 36% में, still FIIs के पास अभी भी we can say almost 63% short positions और सिर्फ 37% long positions है. So that ratio needs to improve in the coming days. If we talk about Nifty at this point, अगर हम Nifty देखें, so Nifty अभी फिलहाल के लिए 0.2% नीचे है. यहाँ पे हमने एक बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न देखा था, फिर कल हमने एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न देखा था यहाँ पे. आज थोड़ा सा सेलिंग पिकअप होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे.
बट अगेन स्ट्रक्चरली इफ यू सी अगर एक वो फिर से वो रेंज में ही है 25,700 25,400, आई थिंक ये 300 पॉइंट के रेंज में शायद निफ्टी घूम सकता है। अगर मैं 5 मिनट चार्ट देखूं, कल अगर आपको याद है कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था ये जो 25,600 का जो लेवल है निफ्टी के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर मैं निफ्टी की 5 मिनट चार्ट देखूं तो निफ्टी 5 मिनट्स में एक लोअर हाई फॉर्मेशन से मूव हो रहा था। अगर देखो दिस हाई, देन इफ यू लुक एट द सेकंड हाई that is lower than, so this is the third high is lower than the second high, fourth high is even lower than the third high। आज का फर्स्ट कैंडल आप देखोगे ऐसा लग रहा था कि शायद ये वाला जो हाई है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे 25,600 एक बार, 25,600 दो बार और 25,600 के करीब तीसरी बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 25,600 तोड़ने में नाकामयाब रहा। और वहां से हमने देखा कि एकदम से नीचे चला गया। और ये अगर हमने कल एक ट्रेंड लाइन बनाया था हमने, और यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा 25,520 25,500 के नीचे वो गया, तब आई थिंक थोड़ा सा सेलिंग थोड़ा सा और बढ़ते हुए नजर आया यहाँ पे। बट अगेन आई फील राइट नाउ अगेन निफ्टी इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग इन दिस 25,480 25,500 जोन्स। सो द फर्स्ट की ट्रिगर इज क्या 25,600 टूट सकता है ऑन द अपसाइड? आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन टू आस्क। सो अगर हम ऑप्शन चेन देखें यहाँ पे, निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो अभी का टाइम है 12:40। सो 25,600 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉल ओआई है। और अगर हम मैं चेंज इन ओआई भी देखूं तो काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी शायद 25,600 आज नहीं तोड़ेगा। इट हाई चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि निफ्टी 25,600 के नीचे ही क्लोजिंग दे। अगर मैं डाउन साइड सपोर्ट की बात करूं यहाँ पे, तो अगर हम 25,500 भी देखें यहाँ पे तो 25,500 में भी कॉल राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। और अगर मैं इंट्राडे एक्टिविटी भी देखूं तो 25,500 में कॉल राइटर्स काफी ज्यादा है। अगर मैं चेंज इन वाई देखूं, मतलब आज के दिन पे क्या हो रहा है 25,500 में, अभी क्या हो रहा है, सो 25,500 में कॉल राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग हियर। सो इवन आई फील ये 25,500 भी एक वीक सपोर्ट नजर आ रहा है। सो आई थिंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स बिलो 25,500। So looking at the current structure, it doesn't look like Nifty might stay around 25,500 for long. High chances are that it might go below 25,500 as well. और अगर हम जो नेक्स्ट सपोर्ट देखें, वो आपका सपोर्ट अगर जो पुट राइटिंग जहाँ पे बैठा है वो है आपका 25,400। अगर हम 25,400 देखें, सो यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, और यहाँ पे भी पुट राइटर्स आर प्रेजेंट एट 25,400 अगर हम चेंज इन वाई भी देखें तो। So I feel if we go below 25,400, then 25,500, then high chances are that we can see Nifty going towards 25,430, 25,400 levels, because Nifty का जो next अगला strong support है वो इसी region में placed है। So 25,500 में एकदम weak लग रहा है, बता ऐसा नहीं लग रहा है कि because call writing काफी ज्यादा है as compared to put writing। निफ्टी को अगर 25,500 सस्टेन करना होगा तो ये जो कॉल राइटर्स यहाँ पे 25,500 पे है उनको अपना पोजीशन कवर करना होगा, एंड पुट राइटर्स को अपना पोजीशंस बढ़ाना होगा। जब ये डेटा चेंज होता है, दैट इज व्हेन वी वुड सी निफ्टी गोइंग अबाउट 25,500। इफ नॉट, देन हाई चांसेस आर दैट निफ्टी माइट रिमेन साइडवेज टू डाउन, और काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस ये लग रहा है कि शायद निफ्टी 25,600 नहीं तोड़ेगा। सो द रेजिस्टेंस इज एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। But on the downside, I feel downside support is placed at 25,400, and 25,500 भी एकदम वीक लग रहा है यहाँ पे। हो सकता है शायद 25,500 के नीचे देखने को मिले, बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो साइडवेज टू डाउन हो सकता है, बट एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट शायद नहीं आएगा निफ्टी में। आई मीन दैट इज व्हाट प्राइस एक्शन देके और ऑप्शन चेन देके यही लग रहा है। So if I look at Sensex again, so Sensex pretty much has a similar story like Nifty। यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ डार्क क्लाउड पैटर्न मिला था डोजी बन के, आज अगेन थोड़ा सा सेलिंग दिख रहा है हमें सेंसेक्स में। तो अगर यहाँ पे हम 5 मिनट चार्ट पर देखें तो सेंसेक्स के 5 मिनट चार्ट पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है। ये 84,000 कल के सेशन में हमने की लेवल देखा था 84,000, यहाँ पे आया था निफ्टी सेंसेक्स अराउंड 83,919 के आसपास, फिर 83,874, आज का हाई 83,935। तो अगर आप देख रहे हो सेंसेक्स भी 84,000 नहीं तोड़ पाया यहाँ पे। सो जैसे हमने 25,600 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा था, तो वैसे ही शायद 84,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है सेंसेक्स के लिए। और सेंसेक्स भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था 5 मिनट चार्ट पर, और वहां से नीचे आ गया। अब वो एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं सेंसेक्स की एक इमीडिएट लेवल्स की बात करूं तो
ये वाला जो लेवल है 83,486, अगर ये काफी टाइम से वो 83,572 83,476 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगर हमें इसके नीचे जाते हुए नजर आए तो हो सकता है हमें 83,300 और उसके बाद शायद इवन टुवर्ड्स 83,000 तक जाते हुए नजर आए हमें सेंसेक्स में, ये भी देखने को मिल सकता है हमें। बट ओवरऑल ट्रेंड देखे अगेन, ये भी एक लोअर हाई फॉर्मेशन, ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट कैंडल ये लोअर हाई फॉर्मेशन को नेगेट कर देगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये सस्टेन नहीं कर पाया। 84,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के रह गया और वहां से सेंसेक्स एकदम नीचे की तरफ चला गया यहाँ पे। सो एकदम से एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के बाद नाउ द प्राइस इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग। अगर हमें 83,480 के नीचे प्राइस जाते हुए नजर आता है तो हो सकता है 83,400 और उसके बाद शायद 83,000 जाते हुए नजर आए हमें सेंसेक्स इन दी probably in the next couple of hours or maybe in the next couple of sessions as well. So थोड़ा सा अगर पे सेंटिमेंट देखो निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, सो साइडवेज टू डाउन है। The chances of we getting a bullish move looks very unlikely, at least for now or at least for the next couple of hours it looks very unlikely here, unless and until data change नहीं होता है तब तक आपका व्यू साइडवेज टू नेगेटिव होगा फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। सो बैंक निफ्टी इज डाउन अराउंड 0.61% लोअर, एंड इफ आई लुक एट द 5 मिनट्स चार्ट, सो ये आपने एक ट्रेंड लाइन, कल आपको याद है हमने ये देखा था 5 मिनट्स चार्ट में, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है हमें प्रीवियस हाई तक जाते हुए नजर आए। तो वही हुआ था बैंक निफ्टी में, वंस वी गॉट अ ब्रेकआउट। सो इफ यू रिमेंबर येस्टरडे अराउंड 12:40 वी हैड डिस्कस दिस, तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलते मिलते फर्स्ट कैंडल में टच द प्रीवियस हाई विच वाज अराउंड 57,600। नाउ अगेन दिस लेवल ऑफ 57,600 इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नाउ। तो अगर हम 57,600 देखें यहाँ पे, तो 57,500 में भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। सो यू कैन सी टोटल ओआई कॉल राइटिंग इज मोर देन पुट राइटिंग, इवन एट 57,600 कॉल राइटिंग इज मोर देन पुट राइटिंग हियर। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, सो कॉल राइटर्स अपना पोजीशंस बना रहे हैं and put writers are exiting their position. That means the bulls are exiting from bank nifty, whereas bears are making their position stronger. Even at 57,600 I can see call writing as compared to put writing here. So again ये जो रेजिस्टेंस है 57,600 57,500 वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पर काम किया, ऐसे लग रहा था कि ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, but I see now we have got a breakdown in bank nifty as well. So I think the immediate level to watch will be 57,000 because हो सकता है अभी 57,100 है, बैंक निफ्टी 57,000 की ओर जाए। अगर हम 57,000 देखें तो टोटल ओआई देखें तो 57,000 में पुट राइटिंग ज्यादा एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग, तो इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी के लिए 57,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। पर अगर हम चेंज इन ओआई देखें तो चेंज इन ओआई में कॉल राइटिंग 47,000 है, पुट राइटिंग 23,000 है। सो अगर 57,000 होल्ड करना है बैंक निफ्टी को तो पुट राइटर्स को यहाँ पे पोजीशंस अग्रेसिवली क्रिएट करना होगा। बट अगर कॉल राइटर्स अपना पोजीशंस अग्रेसिवली क्रिएट करते हैं और पुट राइटर्स एग्जिट करते हैं अपना पोजीशन, तो हो सकता है हमें बैंक निफ्टी 57,000 से नीचे जाते हुए नजर आए और शायद टुवर्ड 56,800 लेवल्स तक जा सकता है। सो आई थिंक द इमीडिएट लेवल, सो अगर हम तीनों इंडाइसेस की बात करें तो तीनों इंडाइसेस का जो रेजिस्टेंस है 25,600 निफ्टी के लिए हो गया, 84,000 सेंसेक्स के लिए हो गया, 57,600 बैंक निफ्टी के लिए हो गया, तीनों एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होके ऊपर जाते हुए नजर आए, शायद वी माइट नॉट बी एबल टू सी दैट टुडे। But looking at the price action, looking at the option data, the trend looks sideways to down. So don't be aggressively longs in this market and don't be aggressively shorts as well. Maybe वो sideways to down हो सकता है and maybe we might get so you can look for some maybe अगर कोई credit spread हो गया जैसे कि आपका bull put spread, sorry not bull put, bear call spread हो गया आपका, so you can look for bear put spreads or bear call spreads. Maybe you can even play out straddle, short not strangle, but you can short straddle जैसे strategies आप देख सकते हो, so that you take benefit out of that sideways to downward movement here. So that is the view for all the three indices. Now talking about key sectors and the key stocks to watch out. So अगर हम देखेंगे आज सारे सेक्टर्स में कुछ इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, but there are certain select stocks that are doing well.
इंफ्रा स्पेस में अगेन वो मोमेंटम है, बट अगेन आज देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट वी आर सीइंग इन द इंफ्रा स्पेस. ऑटो स्पेस में मोमेंटम है, बट अगेन देयर इज नो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखे तो ऑटो में भी इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है. But there are some few stocks that are doing well, that I would like to discuss now. The first stock that I would want to discuss is Indraprastha Gas, IGL. तो अगर हम IGL की बात करें, so IGL is breaking out of the कंसोलिडेशन जोन ईयर. ये जो ये 215 to 195 के रेंज में जो मूव हो रहा था IGL, so IGL is kind of moving out, or it's a matter of getting a strong close above 215 levels today. You can see that RSI has gone above 60. ADX थोड़ा सा नीचे, it's around 7, so ADX kind of needs to improve. तो अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है, फॉलो अप मिलता है, तो हो सकता है 230 240 लेवल्स तक जाते हुए नजर आए. The other stock that is looking well, again it is part of the infra space. हमने 3-4 दिन से देख रहे कि infra stocks में momentum है at this point of time. अंबुजा सीमेंट्स की बात करें, यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला था और वहां से एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप मूव देखने को मिला अंबुजा सीमेंट्स में. वो सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. एडीएक्स इज गोइंग टुवर्ड्स द 25 मार्क. आरएसआई इज ऑलरेडी अप अबाउट 60. So Ambuja Cements can likely outperform in the coming days. और इसका जो सपोर्ट होगा वो ट्रेंड लाइन का जो लाइन है उसी लाइन पे इसका सपोर्ट होगा अराउंड 555 560 लेवल्स. So this is the support level to watch out in Ambuja Cements. The third stock that I want to discuss is Sharda Motors. It's ये आपका क्या बोलते हैं आपका, इट्स लाइक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है यहाँ पे शारदा मोटर्स. सो शारदा मोटर्स में आज एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आया यहाँ पे. सो वी आर सीइंग दैट द प्रीवियस हाई वाज अराउंड 2017. राइट नाउ इट इज एट 2054 और पिछले 2 दिन से अच्छा वॉल्यूम में भी अपटिक नजर आया. इट नीड्स टू सस्टेन अबाउट 2017 2020. अगर इसके ऊपर हमें प्राइस सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है, then high chances are that we can see the price moving northwards in the coming sessions. So the breakout is also supported by the spike in volumes. RSI is also above 60. Price is trading above its key moving averages. ADX has gone below 25. It's right now it's at 21. I think the ADX needs to improve in the coming sessions. The other stock that is showing some positive price action is Kalyan Jewellers. अगर हम Kalyan Jewellers की देखें यहाँ पे अराउंड 575 इसका प्रीवियस हाई है. आज वो प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है. राइट नाउ इट इज एट 593. So Kalyan Jewellers needs to sustain above 593 with 535. That will act as a strong support for Kalyan Jewellers. अगर हमें ये जो इसका जो प्रीवियस हाई है अराउंड 573 575, इसके ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है हमें कल्याण ज्वेलर्स में भी एक शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे. ADX is going above 25, RSI is going above 60, price is above its key moving averages, and it's a matter of getting a strong close above its previous resistance. I think once we get that, high chances are that Kalyan Jewellers can do well in the coming days. I think somebody asked me, Karthik ji had asked me about Bharti Airtel. Yes, Bharti Airtel looks absolutely good. I think remember we identified Bharti Airtel when it was about to break out, it went up. 2-3 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, and again the price has started to go up again. So around 2000 will act as a strong support for Bharti Airtel, and then looks like ये इसके हाइस पे ऊपर भी है, हो सकता है 2100 लेवल्स की तरफ जा सकता है प्राइस इन दी कमिंग सेशंस. With around 2000 इसका एक immediate support होगा. So around 40 points lower from the current levels is where you can keep your support, and you can gradually keep trailing your stop loss so that you take advantage of the trend here. The other stock that is doing well is SRF. So SRF की बात करें तो SRF काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था. हमें 30 जून को एक ब्रेकआउट मिला, फिर कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, एंड वी आर सीइंग सम फॉलो अप मूव कमिंग इन SRF at this point. So SRF, if it gives a strong close above 3250, it can be positive in the short term. Whereas the zone of 3180 is likely to act as a strong support for SRF in the coming days. So all the indicators are positive. It is trading above all its key moving averages. RSI is above 60. ADX is near about 22 levels at this point. So once we get a nice follow-up move, we can see outperformance coming in SRF as well.
The other stock that is doing well, I think metal space. अगर हम देखेंगे सुबह के सेशन में metal sectors, metal stocks में काफी एक अच्छा momentum दिख रहा था. So JSW Steel has given a trend line, downward sloping trend line breakout. It went up, it gave a retest, and again it has reversed and it has gone up now. The ADX has started to point upwards. RSI is also above 60. It is trading above its key moving averages. Maybe around 1014, 1010 will act as a strong support for JSW Steel. And the immediate resistance will be around 1074, 1080. Once it takes 1074, 1080 on the upside, chances are that we can see JSW Steel also doing well in the coming days. The other stock again that is doing relatively well is Amber Enterprises. अगर हम Amber Enterprises देखें, same downward sloping trend line breakout, और ब्रेकआउट के बाद वो कंसोलिडेट किया 2-3 दिन, और पिछले 2 दिन से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही है. And there is some uptick in the volumes as well. ADX has gone about 25, RSI has gone above 60. The price is trading above its key moving averages, and we have gotten a breakout on the daily chart as well. So looks like 7,310 is where the next resistance is. Once 7,310 is taken out, we can see the price moving even higher in the coming days. If we look at Biocon again has given a downward sloping trend line breakout. So the price has gone up. There it has kind of retested to its previous resistance. So this resistance will now act as a support. So 340 is likely to act as a support here. And I think now the price has started to rise up again. So if the outperformance continues, it can go towards the 400 mark in the short term, because that is where the next resistance is placed. So with 340 acting as a strong support for Biocon. The other stock that is doing well is Fine Organics. अगर हम Fine Organics की बात करें, वो एक 50 डे EMA से बाउंस लेके ऊपर गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था 20 DMA से सपोर्ट लेके. अगेन लास्ट 3 days it is showing some good buying here. The ADX kind of peaked out, it went down, and right now it is at 25, 26. Now it at the price, I think RSI is near about the 70 mark. Maybe 4,750, 4,760 will act as a strong support for Fine Organics. And if it continues to move higher, we can see 5,300, another 200 points move in the probably in the short term. So Fine Organics is one stock that you can keep in your radar. The other stock is Inox India. एक strong momentum में था, but there is some profit booking that we saw from its highs here. So Inox India में यहाँ पे around 1254 के आसपास एक strong resistance है. So we need a strong closing above 1254. So ADX is kind of improving. It is near about 12 at this point. RSI is above 60. It is trading above its key moving averages. It went down below its 20-day EMA, but वहां से वो support लेते हुए ऊपर आया यहाँ पे. But we need a strong close above 1250. We don't need a candle like this. I think once we get a strong close above 1250, chances are that even Inox India can outperform in the coming session. So those are all the stocks. So that was about today's bid market session, guys. I hope you found it informative. And now let's start up with the question and answer session. Rhythm Ji is asking for Telenor. Okay, let me look at Telenor. Is it listed, Rhythm Ji? I can't see Telenor here. If you can help me with the symbol. So I think Telenor is not listed, or I'm typing something wrong. Rhythm Ji is asking, okay, I'll take the other stock. Shipping Corporation of India. So it is kind of, after breaking out, it is kind of moving in a range. So maybe about 230, it can be positive. I think if it breaks out about 230, it can go towards 240, 245 levels. And on the downside, 210 is likely to act as a strong support for Shipping Corporation of India. Rhythm Ji is asking for Sona Koyo Steering. Okay. If we look at Sona Koyo, which stock is this again, Rhythm Ji? If you can help me with the symbol, because I'm not able to see this. Okay. JT, okay, it is. Okay. JT EKT India, if I see again, it is consolidating in a range here. So I think 135, 136 is likely to act as a support.
Whereas on the upside around 149, 150. So we need a move above 149, 150. अगर उसके ऊपर move आता है, then chances are that the price can go up higher. But wait until this resistance of 150 is taken out on the upside. Eicher Motors June sales number has come good. Your view, please. Okay, if I look at Eicher Motors. See, Eicher Motors is relatively one auto stock that is doing well, Dinesh ji. So we got a trend line breakout here and the price is steadily moving up. If you're already holding, then you can hold with a support of around 5,600. Maybe it can go until its previous high, which is around 5,900 levels. But the trend is very positive. ADX is also going above 25. RSI is also above 60. It is also trading above its key moving averages. So overall, the trend is also very positive, Dinesh ji. My buying is 608, already sold 340. Please guide. Mukesh ji is asking about Real Infra. What is your buying? Your buying is at 608. Okay, so see the overall trend is positive, but 420 के ऊपर जाएगा तो शायद इसमें और अपसाइड देखने को मिल सकता है हमें, मुकेश जी. So wait until this 420 gets taken out. I think what you can do is for the remaining quantities that you are holding around 360 can act as a good support or a stop loss for this. Because if it goes below 360, chances are that it might lose out momentum. But on the upside, we need a breakout above 420. Mukesh ji is asking, sir, Godrej property is worth buying. Okay. If I look at Godrej Properties, see it had kind of given a breakout. Volume भी था यहाँ पे, but वो थोड़ा सा भी consolidate कर रहा है. The previous resistance is now acting as a support for Godrej Industries. So around 2,300, it needs to sustain about 2,300, मुकेश जी. अगर यहाँ से एक strong bullish candle मिलता है और ये 200 डे के ऊपर हमें क्लोज मिलता है जो कि 2,370 380 के आसपास है, I think then it can be considered as a worthy candidate. But wait, because abhi wo previous support ke aspas hai, we need to see some buying coming in at these levels. Sudhakar ji is asking for data patterns. See, data patterns again, see, thoda sa defense counters mein barring BL and BDL, I think almost all the other stocks are kind of seeing some profit booking here. If you're already holding data patterns, then you can hold with a stop loss of 2775. I think if it goes below 2775, then I can see thoda sa और selling pickup हो सकता है. But on the upside, I feel we need a strong move above 3,155. 3,155, 3,200 because that is where the next resistance is placed. तो उसके ऊपर जाएगा तो again the uptrend can continue. But if it goes below 2775, then chances are that थोड़ा और profit booking देखने को मिल सकता है हमें. Sachin ji is asking, sir, Axis Bank last two candles making lower low. Can I short 11,000 as swing trade? Okay, if I let me look at Axis Bank. Axis Bank good, but अगर आपको short करना ही है Axis Bank, maybe below 1163 can be good, Sachin ji, because ये जो previous जो low है ना, ये trend line के नीचे अगर आपको short करना है तो you can take a chance. Maybe 1134 तक आ सकता है, but ये 1134 भी अगर तोड़ देगा तो हो सकता है थोड़ा और सेलिंग आए इसमें हमें एक्सिस बैंक पर. So wait until this trend line gets taken out. Once that is taken out, I think then you can probably consider that. Tapan ji is asking for view on Info Edge. Okay, so नौकरी की बात करें तो 1550 एक strong resistance है तपन जी, बट अभी 3 दिन से यहाँ पे एक सेलिंग नजर आ रही है. सो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो अराउंड 1390 के आसपास होगा. आई वुड से अगर आपके पास नहीं है तो अवॉइड फॉर नाउ. इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग देन 1390 कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर नौकरी तपन जी. विनय जी इज आस्किंग फॉर सोना BLW. अवॉइड विनय जी, बिकॉज अगर आप देखोगे सोना BLW एकदम से फ्लैट है. देयर इज नथिंग हैपनिंग इन दिस स्टॉक हियर. So around 469 will act as a strong support. If it goes below 469, chances are that we can see down move, more down move in this counter. On the upside, we need some strong reversal signs. It is also trading below its key moving averages. And the ADX is about 25, and the fact that DI minus is above DI plus. So हो सकता है momentum नीचे की तरफ आ सकता है शायद in the coming days. I think that is what I could make out from Sona BLW. So avoid for now, Vinay ji. That is what I would say.
BL divergence. सी बीएल में डाइवर्जेंस तो है यहाँ पे, बट अगेन वी नीड अ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन. सो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं मिलता है हमें, वी डोंट गो बिलो 417 450. अंटिल देन डोंट गो शॉर्ट ऑन बीएल, सचिन जी. भले ही डाइवर्जेंस है, एडीएक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ कूलिंग ऑफ. थोड़ा सा इसको हमें इसके नीचे जाते हुए नजर आना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलना चाहिए हमें. हरीश जी इज आस्किंग सर योर व्यू ऑन गेल. ओके, लेट मी लुक एट गेल. अगर मैं गेल की बात करूं, I think wait until 203 gets taken out on the upside. There is a couple of resistance here. So one is around 200, other is around 203. So wait until this level gets taken out. And on the downside, if it goes below 179, chances are that it can fall further. So for entry, I feel above 203. If you're already holding, then 179 can act as a stop loss. Ekta ma'am is asking for PNB. So PNB is looking good. Overall space is looking positive. अगर ये 112 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो हो सकता है हमें आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे पंजाब नेशनल बैंक पे. सो अराउंड 104 103 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है पंजाब नेशनल बैंक के लिए. सो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड पीएनबी. असिस्टेंट ग्रांड. ओके, हाउ डू यू स्पेल इट? Assistant. Can you help me with the symbol? Vetrivel G, what is the symbol for? Is it assistant? If you can just help me with the symbol name, I'll be happy to guide you. Eicher Motors, not either. Yeah, Eicher Motors, I covered that, Sudhakar Ji. Vinay Ji, thank you. Rhythm Ji is asking for BSNL. But I think BSNL is not listed, Rhythm Ji, or is it? No, I don't see BSNL here. So, not what to consider in scalping option trade. I think particularly in which index are you looking at, or are you asking in general? See, scalping में you need to have a good idea about the trend first. कि intraday में क्या trend चल रहा है, 5 minutes में क्या trend चल रहा है, 15 minutes में क्या trend चल रहा है. And ideally you need to be very good with your entry and exits. You need to know when to exit. You need to know when to enter. And you can't hold on to your scalping trades for long. So if you take a position, it goes against you, quickly get out of that position. Or if you take a position and it goes in your favor, then you need to know as to where you are going to exit, maybe 0.5%, 1%. So Nifty, we already discussed the levels, Rammohanji. So right now, looks like Nifty, Bank Nifty, both are expected to remain sideways to negative. So doesn't look like, even 25,500 mushkil lag raha hai. So maybe you can play it out in that 25,500, 25,400 range if you want to scalp in Nifty. And I think in Bank Nifty, maybe wait until 57,000 is held. If it goes below 57,000, chances are that एक अच्छा शायद एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है below 57,000. Vetrivel ji, okay, you're asking about Asian tiles. Okay. Okay, Asian Granito. Okay, this is the stock you're asking. So right now it is at 63.57. So wait until 71 gets taken out on the upside. And I think downside support right now it is momentum नहीं है, एकदम छोटे छोटे candles बन रहे हैं यहाँ पे, एकदम narrow candles बन रहे हैं. So maybe around 62 एक strong support है, or you can keep support at let's say at 200-day EMA, which is at 59. But I think if you really want to go long, then wait until 70 is taken out on the upside. Can we have entry in Eicher Motors? See, Eicher Motors at this level, I think you can take a chance, but maybe around 5,620 is where the support is. The only thing is it has kind of run up. आई थिंक थोड़ा सा ऊपर है प्राइस, मुझे वो लग रहा है सुधाकर जी. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन breakout मिला था. Ideally somewhere around 5,400 should have been a good entry point. But nevertheless, if you want to take a chance, you can still take a chance with around 5,620 acting as a support. So आप आइशर मोटर्स में वो देख सकते हो. Yeah, good opening in HDB Finance. So yeah, HDB. So what is the symbol for HDB Finance? If you can help me with the symbol.
It got listed today, right? HDB Financial Services, yeah. So almost, yeah. So it's up around. So very good candle. So I think काफी ज़्यादा strong buying भी हुआ है यहाँ पे. So right now it is at 845. So there was this lot of talks that were going around HDB Financial Services here. But yeah, nevertheless, a good opening. So how many of you all actually got HDB? If you can let me know in the chat box. Shri Vidya ma'am is asking for Narayana Rudralya. ये अच्छा trend पे था यहाँ पे. But if you are already holding, you can hold with a stop loss of 1950, Shri Vidya ma'am. So 1950 के नीचे जाता है, it's better to exit. It was in a very good trend, but it is the stock is seeing profit booking since the last 2-3 days here. So 1950 can act as a strong support for the stock. Saurabh ji is asking for Sirma. Okay, let me look at Sirma. अगर मैं Sirma की बात करूँ, yeah, very good. I think Sirma has broken out of its previous resistance. So maybe if you're already holding, you can hold with a stop loss of around this previous resistance will now act as a support. So around 570. So almost 35 points lower from the current level is where the previous support is placed. I think the next resistance is around 646. So maybe around 50 points upside is what we can expect in Sirma. But again, good positive price action structure. RSI is above 60. It is trading above its key moving averages. ADX is also moving. It's right now it is at 19.6. It is moving towards above the 20 levels. So positive. I think the price action structure is positive for Sirma as well. Sudhakar ji is saying, I got HDB in shareholders category in HDFC Bank. Oh, great. Srividya ma'am has also got HDB. Good, good. Very good. Any other queries, any other doubts, guys, do let me know in the chat box. And also, guys, we are having one more webinar today at 4 o'clock. So I am going to take a basic session on the basic principles of technical analysis. कि technical analysis होता क्या है? What are trends? How are prices formed? Supply and demand कैसे होता है? So anyone who's who's wanting to get started in technical analysis, wants to understand what technical analysis is all about, क्या basic principles है technical analysis का. So anyone who wants to start it out, एकदम अगर आप beginner हो markets में, basic level से एकदम basics अगर आप समझना चाहते हो, it is going to be a very simple session. It is no rocket science. We are not going to discuss any heavy strategies. So एकदम बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आई थिंक इट विल बी फन टू अंडरस्टैंड ये टेक्निकल्स होता क्या है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं टेक्निकल्स में, प्राइजेस कैसे ऊपर नीचे होते हैं, सप्लाई डिमांड कैसे जनरेट होता है. All those things is we'll be discussing in our webinar today at 4 o'clock. You can find the link on SBI Securities YouTube channel, guys. Okay, Ramon ji is asking for idea. I would say idea avoid ही करना अभी रामवन जी, because there's a lot of uncertainty going around in this stock. If you're already holding, then you can 6.4 will act as a support for idea. If I look at Senco gold again एकदम consolidate कर रहा है यहाँ पे. So if you're already holding Senco, then I think around 325 will act as a support. On the upside, we need a movement above 405, 410. I think once we get a breakout above 405, 410, I think then we can expect some moment coming in. What is dot plot news in USA? I'm not aware of that, Sachin ji. देखना पड़ेगा क्या है dot plot. Please suggest good books also. Yeah, sure. I will suggest, but I think, see, anyone who is interested in the field of technical analysis, the gold standard certification to be a good technical analyst is your CMT, which is Chartered Market Technician. So you can find those books online as well. I mean, you get those books. So अगर आप CMT का बुक्स ही रीड करना स्टार्ट करोगे, आई थिंक आपका काफी सारा कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएगा. एंड ऑलमोस्ट दे हैव एक्सप्लेन्ड ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स विद एग्जांपल्स. So all the things that I'm teaching you about ADX, these patterns, the principles of technical analysis, all those option strategies, all those things are covered in depth in those books here. And I think what I try to do is, pick topics from there and try to get some examples, stocks, Indian stocks का example से मैं आपको समझने की कोशिश करवाता हूँ. I think
So even if you attend my webinars, even if you don't like reading books, if you attend my webinars, I'll try to cover those topics here. But again, CMT books are good. But apart from that, I will definitely come up with a list of books to look at. Fine Organics, yeah, Tapanji, Fine Organics looks good. You can consider buying with a stop loss of around 4,770. जिमी जी इज आस्किंग सर जुलाई में कौन सा सेक्टर ऊपर रहेगा? जिमी जी, अगर आप एसबीआई सिक्योरिटीज का इंस्टाग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे मैंने जुलाई सीजनैलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया, एक 1.5 मिनट्स का वीडियो है, जहाँ पे मैंने कवर किया कि जुलाई में हिस्टोरिकली मार्केट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है। मैं हर महीना ये वीडियो बनाता हूँ कि इस मंथ के स्टार्टिंग में निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप्स का जुलाई में क्या परफॉर्मेंस रहा है, और जुलाई में अक्सर कौन से सेक्टर्स है जो आउट परफॉर्म और अंडर परफॉर्म करते हैं। तो आप वो वीडियो जाके आप जरूर देखना, ताकि आपको उसमें एकदम से क्लियरली आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस। ओके, आई जस्ट टेक वन लास्ट क्वेरी. Reliance, I feel it can go at least to 1540, 1560 levels in the short term, Rauji. Paramprata ji, yes, sale is also good. आप sale भी ले सकते हो. Sale is looking positive. I think around 129 will act as a support for sale. And I think it can move towards 140, 142 levels in the short term. ठीक है, bye guys, take care, and I'll see you again at 4 o'clock today guys for the webinar on basic principles of technical analysis. जिमी जी, आपको SBI Securities के Instagram चैनल पे जाके मिल जाएगा जुलाई सीजनैलिटी. ठीक है, bye guys, take care and see you at 4 o'clock today. Take care and stay safe.